नमस्कार आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी को स्वागत। ओके ताले समस्त को वेलकम आज इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्लास को। ताले आज आम पढ़ा क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज या पूर्व आम इंस्ट्रक्शनल मीडियम पढ़ी तो आज आम पर्टिकुलर देखा क्लासरूम कम्युनिकेशन उपरे आउ टीचर और स्टूडेंट मान को कौन कौन स्किल दरकार क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने। द बेटर द क्लासरूम इंटरेक्शन द बेटर वुड बी द टीचिंग एंड लर्निंग। ताले क्लासरूम इंटरेक्शन जेते भल हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सेते इफेक्टिव हम। तेणु क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने टीचर और स्टूडेंट मान को किसी स्किल डेभलप करने पड़ो। टीचिंग हूँ गोटे कौन माने इंटरेक्शन प्रोसेस यहाँ हूँ बाबा टीचिंग रे सब बेले मिनिमम 2 जन इनवॉल्व थे जड़े आउ जन सहित इंटरैक्ट करुवे जड़े किसी मेसेज दौथे आउ जड़े रिसीव करुवे और रिसीव कलापर फीडबैक दौथे। बट हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए क्लास व्हेन टीचिंग गोइंग ऑन। ताले एमती क्लास किसी देखी टीचिंग की चली इन मोस्ट ऑफ आवर क्लासरूम एक्सेसिव वर्बलिज्म गोज ऑन द नेम ऑफ गुड टीचिंग। सब बड़े कौन हुए आम सब बड़े कहती कि एक्टिव लर्निंग करा जाउची चाइल्ड सेंटर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करा जाइछि किंतु मोस्ट ऑफ द क्लासेस रे कौन हुए टीचर पढ़ाउथिबे बुक आउ स्टूडेंट माने सुनुथांते जोड़ा को आम कहीपर कि केवल यहीटा ही गोटे आस्पेक्ट गुड क्लासरूम कहवाई। गुड क्लासरूम रे कौन होता है कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है टीचर और स्टूडेंट मान भितर इंटरैक्शन मैक्सिमम इंटरैक्शन होता है। Okay, the teacher goes on explaining the ideas, concept, etc. or simply lectures about various things. Simply हमारा कौन हुए सपोज टीचर किसी जिन पढ़ाऊँ से ताले लेक्चर दियंती ताको एक्सप्लेन करती कॉन्सेप्ट बुझाती ही क्लासेस हमर हुए। द स्टूडेंट इज मेयरली एक्सपेक्टेड टू लिसन पैसिवली। ताले स्टूडेंट मान पाखे सबू जगह अपॉर्चुनिटी न था एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से माने बहुत जगह ओनली पैसिव लिसनर होके रही जाती। तो से जगह आम क्लासरूम इंटरैक्शन को कही पारिबानी कि क्लासरूम इंटरैक्शन टी इफेक्टिव है बा क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव बोली। ताले क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हेल्बाकु हेले आमको चाइल्ड सेंटर टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने पड़ो। सब पिला मानकु सेठी आमको अपॉर्चुनिटी मिलिबो से माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परथिबे केवल एक्टिव पैसिव लिसनर हिकी रहिबेनी। Speaking in the class by the student is generally considered to be an independent behavior. Only occasionally few student will be given a chance to answer question posed by teacher. केबे केबे टीचर केवल स्टूडेंट मान को क्वेश्चन किसी पचारती आउ से भीतर केतेक स्टूडेंट आंसर दियंती। सपोज दे डोंट आंसर द टीचर ओनली गिव अगेन रिपीट हर एक्सप्लेनेशन एंड रीडबल एनर्जी। ताले टीचर कौन करती किसी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट मान पाखे एक्सप्लेन करती स्टूडेंट मान को मझे मझे किसी क्वेश्चन पचारती आउ जदि स्टूडेंट माने न कहि पारती टीचर पुणी आउ थे एक्सप्लेन करबा लागंती। तो यही जगह आम कहीपर कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होची बोली। द काइंड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट टीचिंग। ताले आम बुझी पारे डायरेक्ट टीचिंग क्या कह जाए पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा गला डायरेक्ट टीचिंग रो। Many researches have been conducted to find out the effectiveness of direct teaching and it was found that it is not at all effective one। ताले बहुत रिसर्च करा गला डायरेक्ट टीचिंग उपरे किंतु कौन कंक्लूजन आसिला कि डायरेक्ट टीचिंग सेतिकी हेल्पफुल बा इफेक्टिव नुह कहीं ये मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होची स्टूडेंट मान पाखे अपॉर्चुनिटी कम अच्छी मोस्ट ऑफ द केसेस रे स्टूडेंट माने ओनली पैसिव लिसनर होके रही जाउछंती। The reason behind here the student remain as passive listener बुझेला। ताले जेते बेले स्टूडेंट माने पैसिव लिसनर थिबे सेते बेले केबे भी हमें कहि परिबानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इफेक्टिव होची। तेनो गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पई स्टूडेंट मानको एक्टिव पार्टिसिपेंट हेबाको पड़िबो रादर देन पैसिव लिसनर। Okay, educational psychology tells us that the student learn only when they are actively participate in teaching learning process। ताले एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन कहूँ कि स्टूडेंट माने जदि एक्टिवली पार्टिसिपेट करि पारु नाहंती ताले क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नुह। सो देयर इज ए नीड फॉर इंटरैक्शन मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग। ताले आमे जो कहले डायरेक्ट टीचिंग
टीचिंग कम्युनिकेशन पाई क्लासरूम कम्युनिकेशन पाई डायरेक्ट टीचिंग सेतिके हेल्पफुल नुह हेले हमको को मेथड अडॉप्ट करिया पाई पड़िबो इंटरैक्शन मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड wherein teacher frequently invites suggestion ideas concept from the student and uses these ideas for his explanation ताले इनडायरेक्ट मेथड रे कोन हबो टीचर डायरेक्टली कांसेप्ट एक्सप्लेन करिवेनी स्टूडेंट मान को विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आइडिया शेयर करिया पई अपॉर्चुनिटी देबे एंड स्टूडेंट मान को आइडिया को नै से कांसेप्ट को इनडायरेक्ट वे रे एक्सप्लेन करिवे ओके तापर देखिबा तो यूजेस हिज टीचर कोन करिवे टीचर यूजेस दिस आइडियाज फॉर हिज टीचिंग इंस्टेड ऑफ वन वे लेक्चर The teaching learning process proceeds as a friendly conversation. Our teacher और student को भितरे केवल friendly conversation हबो and discussion between the student and teacher. ताले conversation and discussion होची बहुत important. गोटे effective teaching communication पाई. In other words, we can say that there is a constant interaction between teacher and the student. ताले हमर traditional time रे जो lecture method थिला टीचर कहूथिबे स्टूडेंट सुनुथिबो से मेथड को हमको चेंज करिया पड़िबो कंटीन्यूअस इंटरैक्शन हबा दरकार टीचर और स्टूडेंट मान को भितरे जहा कि टीचिंग कम्युनिकेशन माने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव कम्युनिकेशन करि परिबो फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व ए साइंस क्लास वेयर प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आमे गोटे एग्जांपल नै कि पढिबा जोठी कि हम देखिबा गोटे साइंस क्लास अछि जोठी माने साइंस क्लास चली छि जोठी कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढा जाउ छि कोन हला प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज टीचर फर्स्ट स्टूडेंट मान को क्लास को एंट्री करले इंट्रोड्यूस करले तापरे कोन करले टीचर बसिला परे से गोटे डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू रे चाहिले क्लासरूम को माने हमर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिया पाए ठीक अछि डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू रे से कहिलेनी कि से आज आर्किमिडीज को प्रिंसिपल पढेबे से सेटा कहिलेनी टॉपिक को ओपन करलेनी से केवल कोन करले माने किछि डेमोन्स्ट्रेशन देखिया को चाहिले हैज एनी वन ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल यूजिंग ए बकेट से गोटे क्वेश्चन करले केबे के कोन माने बकेट रे किछि पानी बाहर करछ कि छुआ माने तो माने कोर बकेट रे पानी बाहर करि छथि तांका बाकी एक्सपीरियंस अछि सेति माने कोन कहले यस ओके टीचर इज इट हैव यू नोटिस एनी चेंज इन वेट ऑफ द बकेट व्हेन इट इज इनसाइड द वाटर एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर ताले जेते बेले बकेट टिको बा बाल्टी टेको हमें पानी भीतर को पसौचंती तार वेट रे किछि चेंज होछि कि आ जेते बेले बकेट टी पानी बाहर को आसुछि ता वेट कोन कि चेंज आसुछि कि जो माने कोन करले ना थैंक्स थिंक फॉर ए फ्यू सेकंड्स माने किछि क्षण टाइम नेले और भाबिले तापरे कोन लागिला जेते बेले तांगर मने पड़ला तने कहिले कि जेते बेले बाल्टीटा भीतर को पसा जाउछि खोला बाल्टी सेते बेले सर वेट नाही बा कम वेट अछि हल्का अछि बट व्हेन द बकेट कम्स आउट ऑफ वाटर इट इज हेवी किंतु जेते बेले आसुछि पानी भीतर को ताको अणा जाउछि सेते बेले तार वेट बढ़ी जाउछि टीचर देखिले स्टूडेंट माने बहुत भलो भाबरे से प्रोसेस को ऑब्जर्व करिसंती इट सीम्स टू लूज सम वेट काहे कि जेते बेले से पानी बाहर को वाटरटा आसुची बकेटटा काहे कि किछि माने जेता तळु को जाउची काहे कि वेट लूज करला एटा को कहला अपरेंट लॉस ऑफ वेट जेतारे पानी भितरे बकेटटी अछि पानी भितरे पसिकी अछि सेते बेले तार वेट कम लागुची काहे कि लागुची कना अपरेंट वेट लॉस ऑफ अपरेंट लॉस ऑफ वेट ठीक है Then teacher explain करले why the way have you all experienced this apparent loss of weight of bucket while drawing from water from the well तले समस्त एक्सपीरियंस करिसंती सब स्टूडेंट माने त से माने यस कहले टीचर फुल कम्युनिकेशन स्टार्ट करले now we are going to study a principles relating to this apparent loss of weight in water and other liquid तले एबे टीचर कोन करले किछि किछि अंश रे टॉपिक को ओपन करले एबे पिला माने को बहुत इंटरेस्टिंग लागिला काहे आगुरु से माने से फेनोमेनन सहित acquainted अछंती बा जानि छंती एक्सपीरियंस करछंती here you might have noticed that this lesson proceeds as an interaction between teacher and student चल देखो एबे कोन हैला टॉपिक ता गोटे इंटरेक्शन टॉपिक हे गला इंटरैक्टिव टॉपिक हे गला टीचर माने केवल एक्सप्लेन जदि प्रथम रो टीचर करथांते ताले स्टूडेंट माने को इंटरेस्टिंग सेति की लागि न थांता एबे कोन हैला स्टूडेंट रो एक्सपीरियंस सहित ताको लिंक करा गला तो दे टॉपिक ता कोन हैला बेसी इंटरेस्टिंग हे गला स्टूडेंट माने को लागिला कि से माने से टॉपिक रे सेति की इन्वॉल्व अछंती
ताले एई वे रे जो पढ़ा हला से माने कोन को एटा को कोन को हला इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड। ताले डायरेक्ट टीचिंग एंड इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड रे कोन डिफरेंस अछि जानि परलो। डायरेक्ट टीचिंग रे कोन करा जाउची टीचर डायरेक्टली टॉपिक को ओपन करिवे बा टॉपिक को विषय रे कहिबे एक्सप्लेन करिवे कांसेप्ट बुझेबे तापर स्टूडेंट मान को पचारिबे स्टूडेंट मान जदि न कहि पारंती ताले पुणी टीचर बुझेबे किंतु इनडायरेक्ट मेथड रे कोन होची टीचर माने टीचर स्टूडेंट को माने स्टूडेंट मान को किछि हिस्सा पचारि कि तांको आईडिया नेबे देन टॉपिक ओपन करिवे तापर बुझेबे डिफरेंस थिला एटा। कैन यू कॉल दिस एज एन एग्जांपल फॉर गुड क्लासरूम इंटरेक्शन और इफेक्टिव टीचिंग। आमे कहि परिबा कि ताले इनडायरेक्ट टीचिंग को इफेक्टिव टीचिंग क्लासरूम पई माने यूजफुल बोली। तो एबे कौन होला कि considerable amount of research has been taken place in the field of teacher education to identify the factors that contribute to effective teaching through scientific studies। तले टीचिंग को किपरि भाबरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमें बा कम्युनिकेशन को हमें इफेक्टिव करि परिबा सेति पई बहुत गुडा स्टडी करा जाय छै बहुत गुडा मेथड मध्ये टीचर एजुकेशन में बाहर करा जाय छै जोटा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करि परिबा। In fact, what constitutes effective teaching itself a big question। ताले actually कौन दरकार effective teaching पाई तापर बहुत बड़ा क्वेश्चन ठीक अछि। तापर देखो एठी हमर जतबे हमें पढिबा एठी हमें केतरा वेरिएबल ऊपर जानिबा। इनफैक्ट जतबे हमें डिस्कशन करले पूर्व एग्जांपल हमें दीटा कांसेप्ट जानले गोटे डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। तो देखो A large number of variables are involved in teaching। टीचिंग रे बहुत गुडे वेरिएबल्स अछि तले कोन हला गोटे हला प्रोसेस वेरिएबल सॉरी प्रोसेस इज स्पेलिंग भूल गए प्रोसेस वेरिएबल दोज ऑलरेडी प्रेजेंट व्हेन क्लासरूम लर्निंग कमेंसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। तले फर्स्ट आसुची प्रोसेस वेरिएबल तले प्रोसेस वेरिएबल कोन जानिबा दोज वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द एक्चुअल बिहेवियर इन द क्लासरूम। तले प्रोसेस वेरिएबल टा होची एक्चुअल वेरिएबल जोटा कि क्लासरूम रे एक्चुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करे। एग्जांपल मेथड्स ऑफ टीचिंग द टाइप ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस वी प्रोवाइड टू पीपल टीचिंग एड्स वी यूज and the nature of the subject we teach the way we talk and the manner in which our people react to it and so on। तले ए सब वेरिएबल्स आसुची प्रोसेस वेरिएबल अंडर एम कौन कौन मेथड ऑफ टीचिंग टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टीचिंग एड्स जोटा कि हमें यूज करथांती क्लासरूम रे द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट वी टीच द वे वी टॉक एंड द मैनर इन व्हिच पीपल रेस्पोंड ठीक है ए सब आसुची प्रोसेस वेरिएबल अंडर एम। तापर आसिला कंटेक्स्ट वेरिएबल प्रोसेस वेरिएबल पर आसिला कंटेक्स्ट वेरिएबल रे कोन होची डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट को जो वेरिएबल थ्रू रे हमें डिस्क्राइब करि परिबा से आसुची कंटेक्स्ट वेरिएबल अंडर रे। देन आसुची प्रोडक्ट वेरिएबल रे कोन आसुची लर्निंग आउटकम्स एक्विजिशन ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड जोटा कि हमर एंड रे आसुची लर्निंग आउटकम आमे पढ़ी सारिले जो आउटकम टा आसुतबो सेटा होची प्रोडक्ट वेरिएबल्स माने प्रोडक्ट सब बेले लास्ट रे आसे आमे इनपुट देले प्रोसेस देले एटा होची आउटपुट तले फर्स्ट आसुची प्रोसेस वेरिएबल जोटा कि हमर इनपुट हमर फर्स्ट माने जोटा भी हमर क्लासरूम रे आमे कले सेटा फर्स्ट हैला प्रोसेस वेरिएबल। तापरे कंटेक्स्ट वेरिएबल आमे क्लासरूम एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करूछंती एटा होची कंटेक्स्ट वेरिएबल। प्रोडक्ट वेरिएबल होची लर्निंग आउटकम एक्विजिशन ऑफ स्किल एटीट्यूड्स नॉलेज एटा। हेबे हमें जानिले क्लासरूम इंटरेक्शन ने कोन वेरिएबल्स थाए। दिस डिस्टिंक्शन आर नॉट आर्बिट्ररी बट रादर रिफ्लेक्ट हाउ द वेरिएबल्स ऑपरेट ईच कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। तले ए जो तीनटा वेरिएबल देखिले प्रति वेरिएबल लो अन्यटी सहित संपर्क रही परस्पर को इन्फ्लुएंस करूछंती ताको हम एग्जांपल ले देखि नबा। If the child is bright and extrovert ठीक अछि एठी हला एटा अछि प्रोसेस वेरिएबल he or she may respond readily in class and if teacher confuses the child he or she may score low in the test on that content part। तले जते फर्स्ट कहला कि जदि गोटे स्टूडेंट भलो अछि ओ एक्सट्रोवर्ट अछि माने से इंटरेक्ट करूछि क्लास टीचर का सहित
से सेतिकी फ्री अच्छी से निजको फ्रीली एक्सप्रेस करि पारुछि तो एटा होछि रेडिली क्लास रे रेस्पोंड करछि एटा होछि प्रोसेस वेरिएबल एंड इफ द टीचर कंफ्यूजेस द चाइल्ड सी मे स्कोर लो जदि टीचर कंफ्यूज करिवे से लो स्कोर करि पारे एटा होछि प्रोडक्ट वेरिएबल फर्स्ट हैला प्रोसेस वेरिएबल देन प्रोडक्ट वेरिएबल नेक्स्ट some researchers made a distinction between teacher behavior and teaching behavior आउ केतेटा रिसर्च करा जायछि सेठी रिसर्चर माने कोन करिसंती टीचर कर बिहेवियर एंड टीचिंग बिहेवियर भितरे डिस्टिंक्शन करछंती तले टीचिंग बिहेवियर रेफर्स टू हाउ द टीचर कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन द क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर रे कोन आसुछि टीचिंग बिहेवियर टीचर केमती कंडक्ट करूछंती निजको केमती एक्सप्रेस करूछंती क्लासरूम रे इज ए अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक ठीक अच्छे सी को टाइप रो रिलेशनशिप मेंटेन करूछंती सी केमती निजको एक्सप्रेस करूछंती टीचर मानक सहित से फ्रेंडली ना रिजिड एई सब आसुची टीचिंग बिहेवियर रे डज ही एनकरेज देम और डज ही किल ऑल द एंथुसियाज्म और इनिशिएटिव से स्टूडेंट मानक एनकरेज करूछंती ना डिमोटिवेट करूछंती एटा भी टीचिंग बिहेवियर एंड दोस टीचिंग बिहेवियर डिटरमाइन्स व्हाट इज कॉल्ड द क्लासरूम क्लाइमेट आमे टीचिंग बिहेवियर रु जानि परिबा क्लासरूम रो क्लाइमेट किपरि अछि जदि टीचर कर टीचिंग बिहेवियर रिजिड थिबो से पिला मानकु डिमोटिवेट करथबे ताहले आमे इमेजिन करि परिबा जानि परिबा क्लासरूम क्लाइमेट टी को भलिया आउ जदि टीचर क्लास पिला मानकु एनकरेज करूथिबे ताहले मध्य गोटे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट आमे देखि परिबा तापरे बार्कर 1982 says that teacher initiates 55.2 to 80.7% of all the message in the classroom तले टीचर जो हमरो क्लासरूम इंटरैक्शन माने कोन गोटे मेसेज जाउची टीचर को पाखरु स्टूडेंट पाखो को तले सेठू टीचर इनिशिएट करूचंती 55 to 80% ठीक अछि अकॉर्डिंग टू नुथल एंड स्नोक in classroom individual work accounts to 22 to 45% माने classroom interaction जति टोटल होची 100% तले कोटा केते हमें कैटेगराइज करा जाय छै and extended discourse accounts for 18 to 22% of class time एटी परसेंटेज वाइज देखा जाय छै तो इन्वेस्टिगेटर्स माने कौन देखिले जो स्टडी कले इन्वेस्टिगेटर्स बा रिसर्चर माने कौन पाइले फर्स्ट होची टीचर पीपल इंटरैक्शन तार देखिले कि टीचर पीपल भितरे केते इंटरैक्शन होची पीपल इंटरैक्शन केते होची इंटरैक्शन विथ वेरियस मटेरियल्स एंड द फोकस मेनली ऑन कहा ऊपर फोकस रहइबो कॉग्निटिव एलिमेंट ऊपर माने स्टूडेंट मानकर किपरि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हबो सेतिपई इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट माने तांकर थिंकिंग स्किल लॉजिकल एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ए सब ऊपर केते स्ट्रेस दिया जाउची देखा जिवो अफेक्टिव एलिमेंट ऊपर माने तांकर इमोशनल एस्पेक्ट को मध्य एम्फासिस दिया जिवो साइकोमोटर एलिमेंट ऊपर जेमति समानकर पोस्चर गेस्चर मूवमेंट्स ए सब ऊपर मध्य एम्फासिस दिया जिवो देन एक्टिविटी क्लास रे केते एक्टिविटी होची कंटेंट आसिला माने कोन आमे टॉपिक विषय रे केते कोन कहउचंती किपरि एक्सप्लेन करूचंती फिजिकल एनवायरनमेंट माने कोन हमर क्लासरूम रो सेटअप सिटिंग अरेंजमेंट गुड लाइट एंड एयर कंडीशन ताने तापर आ कोन देखिबा गुड वेंटिलेशन पावर अछि ना नाही सब किछि ओवरऑल एवरीथिंग कम्स अंडर फिजिकल एनवायरनमेंट जोटा हमर क्लासरूम रो चारि पाख एनवायरनमेंट भलो रे जदी साउंड आसु नथुबो लाइट आसु नथुबो बाहर रो नॉइज जदी डिस्टरबेंस क्रिएट करथबो सब कवर हो फिजिकल एनवायरनमेंट रे देन सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर माने कोन जेमति हमरा बॉयज गर्ल्स का भीतर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन करा जाउ नथबो जे को जेंडर बेसिस रे हो किंबा माइनॉरिटीज बेसिस रे हो डिसेबिलिटी बेसिस रे हो रेस बेसिस रे हो ए सब जिंस आसिला सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऊपर जोटा कि गोटे गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन पाई बहुत एसेंशियल तापर हमें देखिबा टीचर बिहेवियर ए सब थिला टीचिंग बिहेवियर तापर आसला टीचर बिहेवियर द टीचर बिहेवियर दस इंक्लूड्स वर्बल बिहेवियर
भर्बाल माने कौन आम कहूबा स्पीकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन टीचर किसी पढ़ेबे एक्सप्लेन करेंगे एंड स्टूडेंट मान को पचारे यहाँ हूँ भर्बाल बिहेवियर लेक्चर देबे एक्सप्लेन करेंगे गाइड करेंगे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सब आसूँ भर्बाल बिहेवियर एंड नॉन भर्बाल बिहेवियर कौन टीचर किसी जिनस को पॉइंट आउट करुवे हाथ देखिए कहते किसी जिनस को एक्टिंग करके पढ़ाऊे तापर ना किसी मूवमेंट गेस्चर ये सब बुझाऊब नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन बा बिहेवियर को both these type of behaviors made the students achieve the desired learning experiences ये उभय माने verbal behavior and non verbal behavior को हमें माने हमको हेल्प करिवो लर्निंग एक्सपीरियंस को अचीव करिवा पाए तापरे नर्जेंसी एंड कैटनर रिगार्ड टीचर बिहेवियर एज ए फंक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचर टीचर का फंक्शन किपरि होची हिज एनवायरनमेंट एंड द टास्क इन व्हिच ही इज एंगेज्ड ए सब ऊपर एक्सप्लेन करिवो टीचर बिहेवियर देन अकॉर्डिंग टू रायल टीचर बिहेवियर इज डिफाइंड एज द बिहेवियर और एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विथ द गाइडेंस और डायरेक्शन ऑफ द लर्नर एटाला हमर टीचर बिहेवियर ऊपर हम देखिले ताले हम दीटा जिंस देखिले गोटेला टीचिंग बिहेवियर एंड द अदर इज टीचर बिहेवियर टीचिंग बिहेवियर टीचर बिहेवियर देखिले ता भीतर हम डिस्टिंग्विश करले जो टाइप रे हम इनडायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट टीचिंग ऊपर करूथिले thus we can make a study of classroom climate in general and the teaching behavior of any particular teacher through what is called interaction analysis ताले एठु आसिला कांसेप्ट कहार इंटरैक्शन एनालिसिस ताले इंटरैक्शन एनालिसिस रे कोन हला आमे गोटे क्लासरूम एनवायरनमेंट बा क्लासरूम क्लाइमेट को स्टडी करिवा टीचर बिहेवियर टीचिंग बिहेवियर सब जानिबा एई सब को कहै जिवो इंटरैक्शन एनालिसिस आमे इंटरैक्शन ओवरऑल गोटे इंटरैक्शन प्रोसेस को हम एनालिसिस कर लेथि इंटरैक्शन एनालिसिस इज an observation technique which can be used to obtain fairly reliable record of spontaneous verbal statement ठीक अछि तले बुझियला कोन होची हमरो टीचिंग बा इंटरैक्शन एनालिसिस हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनालिसिस करबा टीचिंग लर्निंग इंटरैक्शन प्रोसेस को एनालिसिस करबा एटा कहला इंटरैक्शन प्रोसेस देन सब जिंसर जेमति ऑब्जेक्टिव थाए क्लासरूम कम्युनिकेशन सेमति मध्ये किछटा ऑब्जेक्टिव रहिचे तले हमें बे डिस्कशन करबा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम इंटरैक्शन The fundamental objectives of classroom interaction are to observe teaching behavior of the teacher. First, teaching behavior observe करिया कहार टीचर करो to plan strategies in order to remedy his behavior so as make it suitable for teaching learning situation. जदि टीचर को बिहेवियर सुइटेबल अच्छी तो देन भल कथा जदि टीचर को बिहेवियर सेतिके सुइटेबल नाही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पई से जगह आमको कौन करिया पड़ो आमको सुइटेबल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिया पड़ो रिमेडियल क्लास पर रिमेडियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया पड़ो क्या टीचर को टीचिंग बिहेवियर रे एप्रोप्रिएट चेंज आनिबा पाए टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम एंड देन टू सजेस्ट रिमेडियल मेजर तले टीचिंग लर्निंग माने प्रोग्राम रो ड्रॉबैक्स आइडेंटिफाई करिया पड़ो एंड रिमेडियल मेजर प्रोवाइड करिया पड़ो एटा थिला एटा होचे हमर ऑब्जेक्टिव क्लासरूम इंटरैक्शन आमे तले गोटे क्लासरूम एनालिसिस करूचंती इंटरैक्शन एनालिसिस करूचंती हमको ए ऑब्जेक्टिव को माने प्रथमे रक्षा सेट करिया पय पड़िबो तापर आसुची इंटरैक्शन एनालिसिस रे हमको कोन करिया को पड़िबो इंटरैक्शन एनालिसिस फास्ट कोन जानिबा ए होचे गोटे टेक्निक आमे जोथरे कि टीचर करो वर्बल बिहेवियर को स्टडी करिया या पूर्व आम देखते टीचिंग बिहेवियर ऊपर एबे देखिबा टीचर बिहेवियर द टर्म इंटरैक्शन एनालिसिस इज लेबल्ड दैट रेफर्स टू एनी टेक्निक फॉर स्टडीइंग द चेन ऑफ क्लासरूम इवेंट इन सच वे दैट ईच इवेंट इज टेकन इनटू अकाउंट तो फर्स्ट कोन हला आमे टीचिंग बिहेवियर देखिले देन एबे आमे कोन करबा क्लासरूम रे बहुत गुडे एक्टिविटीज हुए आमे ओवरऑल सब जिंस को आमे कोन करबा एनालिसिस करबा टेक्निक रे इंटरैक्शन एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन आमे मो माने मोर इंटरैक्शन को एनकोड एंड डिकोड करबा कहा का भितरे जो इंटरैक्शन होची दी जन को भितरे
कम्युनिकेटर एंड द रिसीव भितर तो रिसीवर भितर आम से दी जनक भितर इंटरेक्शन को आगे एनकोड एंड डिकोड करवा तापर देखिए नेक्स्ट एनकोडिंग हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट इन ए मीनिंगफुल वे आम सब जिन को गोटे मीनिंगफुल वे रे रेकर्ड करवा एंड डिकोड को कौन अरेंज करवा जो सब ओवरऑल इंफॉर्मेशन डाटा को आम अरेंज करवा In case of teaching learning, classroom interaction analysis refers to any system of for coding spontaneous verbal communication. आम देखिले क्लासरूम रो कम्युनिकेशन दुई प्रकार होचे गोटे ला verbal communication and the other is non verbal communication. आम जेते बळे क्लासरूम कम्युनिकेशन को एनालिसिस करूछंती हमको कोन करिया को पड़िबो टीचिंग लर्निंग क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस रे कोन करबा एनी सिस्टम फॉर कोडिंग स्पॉन्टेनियस वर्बल कम्युनिकेशन आम जो वर्बल कम्युनिकेशन को कोड करबा अरेंजिंग द डाटा इनटू ए यूजफुल वे डाटा को अरेंज करबा एंड देन एनालाइज द रिजल्ट इन ऑर्डर टू स्टडी द पैटर्न तापर कोन करबा रिजल्ट को एनालिसिस करबा रिजल्ट को एनालिसिस करबा एटा हला हमरो क्लासरूम इंटरेक्शन एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस इंक्लूड ताले सिस्टम ऑफ जो हमरो इंटरेक्शन रहला सेठी कोन कोन रहउची सेटा को देखिबा ए सेट ऑफ कैटेगरीज इज डिफाइंड क्लियरली फर्स्ट सब कैटेगरी को हमें ठीक रे डिफाइन करबा ए प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्वेशन एंड सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स फॉर कोडिंग ताले प्रोसीजर गोटे रहउतबो स्टैंडर्ड प्रोसीजर steps for tabulating the data in order to arrange a display which aids in describing the original event suggestion which can be followed in some more common application तापर देखिया एटा रहला कोन ए सब जिंस ए सब कंपोनेंट दरकार कोथरे क्लासरूम बा इंटरेक्शन सिस्टम रे दरकार ए सब इंपोर्टेंट तापर मेथड्स ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस रो कोन मेथड रहले देखिबा अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एल ओबेड एटाल दाउची से रिसर्च कर ना ऑब्जर्वेशनल सिस्टम मे बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिक काइंड गुड एंड बेसिक काइंड साइन एंड कैटेगरी दी प्रकार आइला गोटेला साइन एंड कैटेगरी फर्स्ट हम देखिया साइन सिस्टम इन दिस साइन सिस्टम ए लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स आर गिवन साइन सिस्टम रे बहुत गुडे बिहेवियर लिस्ट डाउन करा जायथिबो द बिहेवियर्स आर मार्क्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशनल पीरियड जो टाइम रे क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम ऑब्जर्व करूथबा सेही टाइम रे से बिहेवियर गुडा को लिस्ट करा जिवो इवन इफ द बिहेवियर ऑकर्स नंबर ऑफ टाइम जदि भी गोटे बिहेवियर बारंबार रिपीट होतबो ततबे ताको हमें लिस्ट डाउन करितबा आउ कोन हो इन दिस सिस्टम ऑब्जर्वेशन आर मेड टू चेक द अकरेंस ऑफ एनी बिहेवियर ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम तले से सिस्टम रे कोन हो ऑब्जर्वेशन आर मेड टू चेक आ बारंबार ऑब्जर्वेशन निया जिवो से बिहेवियर गुडा किपरि तार अकरेंस ऊपर में ऑब्जर्व करिया माने केते बेले टीचर से बिहेवियर पोस्ट माने देखौ जंती रिपीट केते बेले होउची एई सब ऊपर हम कोन करबा माने ऑब्जर्व करबा एंड तार अकरेंस से बिहेवियर अकरेंस ऊपर हमें डाटा नबा तापर आछि कैटेगरी सिस्टम according to this system teacher behavior is divided into various units each behavior unit is classified into categories कौन कौन कैटेगरी करला द कैटेगरी सिस्टम डिफर्स फ्रॉम साइन सिस्टम हम दुईटा सिस्टम देखले फर्स्ट हमें जानले साइन सिस्टम ऊपर देन हम आसिले कैटेगरी सिस्टम को कैटेगरी सिस्टम रे कहला टीचर बिहेवियर को हमें वेरियस यूनिट्स रे माने कैटेगराइज करले बा पार्ट करले each behavior unit is again classified into categories तापर पुनी करागला सब प्रकार behavioral unit गुडा को पुनी कैटेगरीज करागला the category system differs from science system ताले category system science system रो केमती डिफर करची in the sense that the sequence of occurrence of behavior and the frequency of occurrence are noted ताले आम ये कौन करे सब बिहेवियर यूनिट को अलग अलग कैटेगरी कले तापर तार सीक्वेंस ऑफ अकरेंस को सीक्वेंस रे माने घटुची से बिहेवियर देखौचंती एंड को बिहेवियर को रिपीट करूचंती बा तार फ्रीक्वेंसी कोन एटा को नोट डाउन करले एटा ला कैटेगरी सिस्टम तापर देखो बेसिक थ्योरेटिकल अजम्पशन ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस रो थ्योरेटिकल अजम्पशन कोन रहला हम देखिबा the various theoretical assumptions which are basic to a very idea of interaction analysis
as follows. ताले हमको ये दिया जाइए हमर जो assumption निया जाइए introduction analysis ପାଇଁ दिया जाइए कौन निया जाइए the role of classroom climate is crucial. First thing is classroom climate जोटा कि classroom communication ପାଇଁ बहुत important. Teacher classroom behavior in particular exert a crucial influence on people. Then teachers classroom behavior teacher कर behavior कौन रोची सेटा मध्य student मानकर ऊपरे बहुत influence पके था. तापरे children tend to be conscious of a warm acceptance by teachers and to express greatest fondness of democratic teacher. टीचर माने के स्टूडेंट माने केबे भी ऑटोक्रेटिक नेचर टीचर कर पसंद करने से माने को डेमोक्रेटिक नेचर पसंद हुए जदि टीचर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड शो करिवे टीचर माने स्टूडेंट माने निजे को फ्रीली एक्सप्रेस करि परिबे. तापरे द टीचर एक्सर्ट्स ए ग्रेट डील ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन पीपल. तले टीचर कर बहुत बड़ इन्फ्लुएंस पड़े स्टूडेंट मानकर ऊपर. People's behavior is affected to great extent by the type of teacher behavior exhibited. तले टीचर जो टाइप रो बिहेवियर देखेबे तार इंपैक्ट पड़िबो स्टूडेंट मानक ऊपर. देन टीचर बिहेवियर होची फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाउची ताकू जदि हम प्रॉपर्ली गाइड करि पाले देन स्टूडेंट बिहेवियर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हे पारिबो. The relation between student and teacher is a crucial factor. टीचर बिहेवियर जानले स्टूडेंट बिहेवियर जानले एबे आसले स्टूडेंट और टीचर भितर रिलेशन कैन एंड मस्ट बी कंसीडर्ड एज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेथोडोलॉजी. टीचर और स्टूडेंट भितर जो रिलेशन थिबो ताको देखि कि हमें मेथोडोलॉजी को हमें डिटेक्ट करि परिबा बा फिक्स करि परिबा यार इंपैक्ट अछि टीचिंग मेथोडोलॉजी ऊपर. It has been established that social climate is related to productivity and to quality of interpersonal relation. Social climate हमें physical environment देखले classroom environment देखले बे classroom रे social climate देखिबा जहार productivity and quality ऊपर माने रही इफेक्ट. It has been proved that democratic atmosphere tend to keep work of relatively high level even in the absence of the teacher. तले क्लासरूम रे को बड़ा एटमॉस्फेयर रहबा कथा डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर जोटा रखी माने बहुत क्वालिटी ऊपर हाईली इन्फ्लुएंस रही छै. तले ये सब फैक्टर होची कहा पई दरकार टीचर और स्टूडेंट भितरे जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करिया पई दरकार. तले आज हमें जानिले क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड टीचर और स्टूडेंट कर बिहेवियर ऊपर माने क्लासरूम कम्युनिकेशन पाई टीचर और स्टूडेंट को भीतर कौन कौन माने चेंज दरकार स्किल दरकार कौन केमती बिहेवियर हेतिबा दरकार ता ऊपर जानिले. तले आज रो क्लास को हम इट रखिबा पुणी नेक्स्ट क्लास रे गोटे नुवा कंटेंट हमें पढिबा. तले आज पई इतकी पढिबा. थैंक यू. यही परिका फ्री क्लासेस पाई आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं पाखे थिया बेल आइकन बटन को क्लिक करंतु.